Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. In our previous video, we discussed exercise 12.1 up to question number 4. Today, we will continue from there. So, this is our question number 5. Question says, find the value of m for which 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 is equal to 5 to the power 5. So what is given to us? 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 is equal to 5 to the power 5. Now if you look at the left side of this, it is a to the power m divided by a to the power n. The formula a to the power m divided by a to the power n is a to the power m minus n, that is equal to 5 to the power m minus 3. माइनस 3 क्यों? क्योंकि n के प्लेस पे माइनस 3 है और ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5. So this minus minus will be plus. So this is 5 to the power m plus 3 is equal to 5 to the power 5. Okay. Now देखो यहाँ पे बेस यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है. So अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं और दोनों का बेस भी इक्वल है तो दोनों का एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा. That is m plus 3 is equal to 5. What we are doing here? We are here comparing exponents. Comparing exponents. Now this plus 3 will be transported. Transportation हमने पढ़ा है. This will be 5 minus 3 and value of m is 2. So this is our answer. You have to find the value of m. So the value of m is 2. This is our question number 5. Next is question number 6. Question 6 says evaluate, means you have to find the values of this. So question number 6, first question is 1 by 3 whole power minus 1 minus 1 by 4 whole power minus 1 and whole to the power minus 1. So बॉड मास लगाओगे तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा. अब स्मॉल ब्रैकेट का पावर नेगेटिव है, सो वी हैव टू यूज फॉर्मूला a by b पावर माइनस m इज इक्वल टू b by a पावर m. ठीक, फॉर्मूला आपको ये याद हो गया होगा अभी तक. सो दिस विल बी, देखो ये 1 by 3 है, ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 3 by 1. तो 3 by 1 अपॉन में 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. दैट इज सिंपली 3 टू द पावर प्लस 1 माइनस, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 4 टू द पावर 1 होल टू द पावर माइनस 1. सो 3 टू द पावर 1 इज 3, 4 to the power 1 is 4 power minus 1. That is 3 minus 4 is what? Minus 1 to the power minus 1. Again power is negative. So ये हो जाएगा सेम कॉन्सेप्ट. a to the power minus m is equal to 1 by a to the power m. So this will become 1 upon minus 1 to the power 1. So this is nothing but 1 upon minus 1 and 1 by 1 is 1. So answer is minus 1. The question answer of this question is minus 1. Our second question is 5 by 8 power minus 7 into 8 by 5 power minus 4.
we have to solve. Now again the power is negative and we cannot solve negative power. Actually we can, but we should not solve negative power. We have to change that into positive. So again we will apply a by b whole to the power minus m is equal to b by a power m. So this will become 8 by 5 power 7 into 5 by 8 power 4. Now we can use this formula, a by b power m whole to the power m is a to the power m upon b to the power m. होल के पावर में उसको हम अलग अलग कर सकते हैं. That is nothing but 8 to the power 7 upon 5 to the power 7, 5 to the power 4 upon 8 to the power 4. So ये 8 वाला टर्म इधर और 5 वाला टर्म हम इधर लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, आगे पीछे कर सकते हैं. सो दिस कैन बी 8 टू द पावर 7 अपॉन 8 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 7. ओके, नाउ अब दोनों का बेस सेम है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n. Okay, so this will become 8 to the power 7 minus 4 and this will become 5 to the power 4 minus 7. 7 minus 4 is 3, that is 8 to the power 3 into 4 minus 7 is minus 3. Again this power is negative, so a to the power minus m is 1 by a to the power m. So this will become 8 to the power 3 into 1 by 5 to the power 3. Now अगर बोल देता कि सिर्फ वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना है तो हम 8 टू द पावर 3 बाय 5 टू द पावर 3 लिख के छोड़ देते, बट वी हैव टू इवेल्युएट, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 3. 8 to the power 3 means 8 into 8 into 8. 8 8 is 64 into 8. 4 is 32. 512. So this will be 512 and 5 5 is 25. 25 25 is 125. So value of this, answer of this question is 512 upon 125. Next is question number 7, that is सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करके हम जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करना है, लोएस्ट टर्म में लेकर जाना है. ओके, सो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन 7, फर्स्ट वन इज 25 इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 to the power -3 into 10 into t to the power -8. ओके, नाउ ये जो 25 है, ठीक, सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 और ये 25 कैंसिल हो सकते हैं 5 के टेबल से. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. ओके, सो अभी हमारे पास बचा 5 इंटू टी टू द पावर -4. हियर इट इज़ 5 टू द पावर -3 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर -8. ओके, अब देखो ये 1/2 को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अपॉन में अलग से 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन 5 टू द पावर -3. ऊपर भी 5 वाला टर्म है, नीचे भी 5 वाला टर्म है एक साथ. एंड सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज टी टू द पावर -4 अपॉन टी टू द पावर -8. ओके, नाउ ये ध्यान से देखोगे ये कुछ नहीं है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.
So this is nothing but a to the power m upon a to the power n. ऊपर भी बेस 5, नीचे भी 5, सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट, सेम बेस t डिफरेंट एक्सपोनेंट. सो दिस फॉर्मूला इज a to the power m minus n. ये हम लगाते हैं. So this will become 1/2 into this will be 5 to the power 1 minus 3, क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूले वाला और -3 ये पहले से है. t to the power -4 minus 8. So that is equal to 1/2 into minus will be plus, that is 1 plus 3, that is 5 to the power 1 plus 3 into t to the power -4 plus 8. So overall this can be written as 5 to the power 4 into t to the power 4, 8 minus 4 and 2 in denominator. This is the simplest form. इससे ज़्यादा simple ये नहीं हो सकता. So this is simplest form of this question, that is question number 1. Next is question number 2, the last question of this exercise, question number 7, second part. This question we have to simplify. The question is 3 to the power -5 into 10 to the power -5 into 125 upon 5 to the power -7 into 6 to the power -5. सबसे पहले तो जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे तो इजी हो जाएगा. सो वी विल यूज फॉर्मूला a to the power minus m is equal to 1 by a to the power m and 1 by a to the power minus m is equal to a to the power m. सिंपली अगर ऊपर में नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो नीचे आके पॉजिटिव, और नीचे एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव. सो ओवरऑल ये हो जाएगा 125 तो ऊपर था वो ऊपर रहेगा, उसको मैं सबसे पहले लिख दिया. 5 पावर -7 जो है नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, दैट इज 5 पावर 7. 6 पावर -5 ऊपर जाएगा, दैट इज 6 पावर +5. 3 पावर 5 नीचे इंटू 10 पावर 5 नीचे. ओके, नाउ what is this? 125 is 5 power 3. 5 5s are 25. 25 5s are 125. So 125 can be written as 5 power 3 into 5 power 7. 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 whole power 5. This is 3 power 5 and 10 can be written as 2 into 5 whole power 5. Okay, now we can use this formula. A into B whole to the power m. A into B whole to the power m is A to the power m into B to the power m. अलग अलग लिख सकते हैं हम. So this will be 5 to the power 3 into 5 to the power 7 into 2 to the power 5 into 3 to the power 5. Denominator is 3 to the power 5. This is 2 to the power 5 into 5 to the power 5. अब देखो 3 to the power 5 ऊपर भी है, 3 to the power 5 नीचे भी है, 2 to the power 5 ऊपर भी है, 2 to the power 5 नीचे भी है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह थे तो कैंसल. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 to the power 3 plus 7 and this 5 to the power 5 when go up. Okay, that is we will do later. This 5 to the power 5. Which property here? A to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. So 3 plus 7 is 10. 5 to the power 10 upon 5 to the power 5. I am doing this directly. It is 5 to the power 10 minus 5. That is 5 to the power 5. This is our answer. And if still you have any doubt, then you can ask me in comment section.
Do share this with your friends. If you haven't subscribed channel, then subscribe channel. Next class we will continue our this chapter. That will be last video of this unit, exercise 12.2. Thank you.